Hello guys, this is Vinay here and today I'll be deliberating my fourth lecture on ancient history. Hope you like and love the same. So before any more Gyan, let's kick off with Vigyan. Now let's go forward to the next topic. Next topic is foreigners' account. We know that basically people from three countries came to India: Greeks and Romans, the Chinese and Arabs, who came in large numbers. They resided in India, wrote about India and went back. Greeks and Romans से कितने जन आए थे? 7 जन. चाइना से कितना? 2 इंपॉर्टेंट जन आए थे. एंड अरब से कितना? 1 जन. सो बेसिकली सबसे छोटे से चालू करते हैं, अरब से चालू करते हैं. अरब से कौन आया था? अरब से केम एन इम्पॉर्टेंट पर्सन अल बरूनी. ही केम अलॉन्ग विथ महमूद ऑफ गजनी. नाउ देयर इज अ स्मॉल स्टोरी अबाउट अल बरूनी. सुन लीजिए, इट वुड बी एन इंटरेस्टिंग वन. Now this Al-Baruni was basically from Khiva, Uzbekistan. He was a very, very learned man. He knew astronomy, he knew astrophysics, he knew many languages. So basically he was one of the 9 gems of his king and अपना आराम से जिंदगी व्यापन कर रहा था, आराम से लाइफ कट रहा था उसका. Suddenly his empire was invaded by Mahmud of Ghaznavi or Mahmud of Ghazni. Who is this Mahmud of Ghaznavi? This Mahmud of Ghazni is the same person who came to India also and attacked on the same Somnath temple 17 different times. बोले एक ही जगह आया, बोले एक ही टेम्पल में 17 बार लूटा. क्या गजनी आदमी था क्या? भूल जाता था कि आई हैव कम टू इंडिया एंड अगेन यूज्ड टू कम 2 महीने बाद वापस, 3 महीने बाद वापस. It wasn't the case. At that point of time, the entire Somnath temple was completely made out of gold. The walls, the ceilings, the floor. तो बेसिकली उसको 17 बार डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में आना पड़ा. When he used to come, he used to kill thousands of Hindus. He used to bring along thousands of camels, horses, mules, ताकि he can loot the entire wealth of India and again go back. So the same Mahmud of Ghaznavi came to his kingdom also and attacked the same Khiva. And he issued a command. Whomsoever is saying Mahmud of Ghaznavi की जय हो, उसको तो रहने दो. And whomsoever is not saying Mahmud of Ghaznavi की जय हो, उसको जेल के अंदर ले जाके ठोक दीजिए. अब ये अल बरूनी ठहरा एकदम ईगोइस्टिक आदमी, एकदम अकड़ वाला आदमी. बोला हम कैसे बोल दे कि महमूद और गजनावरी की जय हो, मेरे को ये आता है, मेरे को वो आता है, फलाना आता है. सो एज रिजल्ट ही डिडंट सेड. तो क्या हुआ होगा? जेल के अंदर ले जाके डाल दिया. अब 2 महीना बीता, 4 महीना बीता, 6 महीना बीता, सारा का सारा अकड़ निकल गया उसका. तो ऑन वन फाइन नाइट ही कॉल्ड द जेलर ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल एंड उसको बुला के बोला कि सी आई एम अल बरूनी. So the jailer said, if you are Al-Baruni, हम मोहम्मद शेख है, काम का बात बोलो, काम क्या है तुमको. So this Al-Baruni said that, see, I'm a very, very learned man. I'm pretty sure if your king meets me, he'll be highly impressed by me. If he gets impressed by me, he'll make me one of the 9 gemstones. And in turn, I will make you the commander-in-chief of the army. तो जाके राजा को बोलो Al-Baruni मिलना चाहते हैं, तुम्हारा प्रमोशन तुम्हारे लिए वेट कर रहा है. अब ये मोहम्मद शेख एकदम खुश हो गया, बोला वाह वाह, प्रमोशन मिलेगा. सो भागता हुआ जेल के बॉर्डर तक गया. फिर अचानक से कुछ सोचा, घूम के वापस आया और पूछा, व्हाट इफ यू आर नॉट एबल टू इम्प्रेस द किंग, तब क्या? सो अल बरूनी सेड इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इफ आई एम नॉट एबल टू इम्प्रेस द किंग, ही विल किल यू ऑल्सो, ही विल किल मी ऑल्सो, बट विदाउट रिस्क देयर इज नो रिवॉर्ड. रिस्क तो लेना पड़ेगा बॉस. So somehow this Muhammad Sheikh arranged a meeting between Mahmud of Ghaznavi and Al-Baruni. And as it was anticipated, Mahmud of Ghaznavi was highly impressed by this Al-Baruni. And he made him one of the 9 gemstones. And Al-Baruni also kept his words. He made Muhammad Sheikh the commander-in-chief of the army. But that's not the end of the story. Now this Al-Baruni was seeing that this Mahmud of Ghaznavi is going to India. साल में 2 बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है. बोले हो क्या रहा है? महमूद ऑफ गजनावरी, एक बात पूछना चाहता हूँ, कैन आई आस्क? महमूद ऑफ गजनावरी सेड, पूछो अल बरूनी, तुमको जो पूछना है पूछो. दिस अल बरूनी सेड, अगर आपको कुछ चक्कर चल रहा है इंडिया में तो प्लीज़ मेरे को बताइए, आई विल सॉल्व इट. तो गजनावरी एकदम चौंक गया. बोले चक्कर मतलब? बोले चक्कर मतलब कोई लड़की का कोई झमेला चक्कर है तो बोलो यार, आई विल सॉल्व इट. सो दिस महमूद ऑफ गजनावरी सेड, अगर हमको कुछ पसंद आएगा तुम उठा के नहीं ले आएगा. तो बोले अगर आपका कोई चक्कर नहीं चल रहा है तो वाई आर यू गोइंग टू इंडिया 3 times 4 times? सो दिस गजनावरी एक्सप्लेन टू अल बरूनी, इंडिया इज़ अ मैग्निफिसेंट कंट्री, इट्स फुल ऑफ गोल्ड, सिल्वर, इट हैज़ अ वेरी नेचुरल गुड क्लाइमेट, तो आई लाइक गोइंग ओवर देयर. तभी मैं 3-4 बार जाता हूँ.
So Al-Biruni said to Mahmud of Ghaznavi, on your next visit to India, I'll come along with you. While you're looting the temples, while you're killing the Hindus, I'll write good literature about you. गजनावरी को आइडिया बढ़िया लगा, बोले नहीं ये तो बढ़िया है, हम मारेगा और ये मेरे बारे में बढ़िया हिस्ट्री लिखेगा. इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस. इसका घूमना भी हो जाएगा, मेरा लिटरेचर भी लिखा चला जाएगा. So on the next visit, Al-Biruni came along with Mahmud of Ghaznavi to India. As soon as he came to India, he fell in love with Gita. Which Gita? शाबाश, लड़की गीता. तो याद रखिएगा, आप हो, अल-बरूनी था. He fell in love with Bhagavad Gita. He fell in love with Bhagavad Gita so much that he decided that I'll stay in India for some more time. I'll be learning the Sanskrit language also. He also wrote a book in India which is known as Kitabul-ul-Hind or Tehkeek-e-Hind, which means India and its people. According to Al-Biruni, Banaras is a heaven on earth. कि आप कुछ भी करो, अगर जितना ही पाप किए हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप बनारस जाके मरोगे तो सीधा स्वर्ग जाओगे. Similarly, according to Hindu mythology, there is another place which is known as hell on earth. कि आप जितना भी बढ़िया काम किया हो, doesn't matter, you go and die over there, you'll go to hell. Which is that place? It's in UP only. It's called Maghar. It's basically Maghar near the Gorakhpur district of Uttar Pradesh. It is said that it's a hell on earth. If you go and die over there, you'll go to hell. So did you learn anything new from this video? Like the video if you loved it. Simply dislike it if you disliked it. But do leave a comment in the section below. And yes, most importantly, don't forget to share, subscribe and go ninja on the notification icon. So see you guys until the next time. It was a pleasure teaching you guys. Thank you guys.